Students, let's move to the next exercise, which is about the conjunctions. Let's see what the question is. Fill in the blanks with appropriate conjunctions. Student, we have to fill in the blanks with appropriate conjunctions in the blanks. Conjunctions are those words which can work as a bridge between two words, two sentences, two phrases, or two ideas. The phrases can be independent as well as dependent. Let's see what are the filling the blanks. He ran dash, he missed the train. यहाँ पे student but will be a suitable conjunction. Wait till I returned. Work hard unless I didn't come because you did not invite me. You will get a prize dash, you will deserve it if you will deserve it. So student, in this whole exercise हमने ये देखा कि हमने conjunctions वो put किए जो पहले और दूसरी थॉट को आपस में जोड़ते हैं लॉजिकली. तो वी कैन से कि ये कनेक्टिव्स के तौर पे काम करते हैं. कंजंक्शन किसी एक सेंटेंस में बिटवीन वर्ड्स और फ्रेजेस और सेंटेंसेस जो कि एक लॉजिकल सीक्वेंस या एक लॉजिकल थॉट कन्वे करती है. तो कंजंक्शंस जरूरी हैं हमारे पास मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए. आई होप स्टूडेंट आपको ये एक्सरसाइज समझ आ चुकी होगी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन.